Hello everyone, welcome to the class. Now we have received certain queries from our students from the book T.S. Gariwal 2021 edition from the chapter Admission of a Partner from the topic Accounting Treatment of Goodwill. So we are going to take up the questions from the book and solve them simultaneously for our students. Now the first question which we have taken for the day is question number 25 from the chapter Admission of a Partner, book T.S. Gariwal 2021 edition from the topic Accounting Treatment of Goodwill. And the question says that X and Y are two partners. They were sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Z is admitted as a new partner and he is bringing the premium for goodwill as 30,000 in cash. The new profit sharing ratio between X, Y and Z is equal 1:1:1. We have to pass the necessary journal entry for giving the accounting treatment of goodwill. Now see, Z is bringing the premium for goodwill in cash 30,000. So though they have not asked, but just for your knowledge, let me tell you that when the premium for goodwill is brought in by the incoming partner in the cash, we pass the journal entry cash account debited to premium for goodwill account to premium for goodwill account. And since the amount of goodwill which is brought in by the new partner is 30,000, so the amount to be debited and credited is 30,000. So cash account debited 30,000 to premium for goodwill account 30,000. Fine. Now Z is bringing this premium for goodwill 30,000. Z is bringing premium for goodwill as 30,000 for his 1/3 share. Fine. For the 1/3 share in the partnership. Now let us see that when Z is admitted with 1/3 share. Now let us see that whether both X and Y are sacrificing partners. See, we know that sacrificing ratio is equal to your old ratio minus new ratio. Let us see that how much X and Y have sacrificed. Now for X, the old share was 3/4, new share 1/3. So if I solve it, the LCM of 4 and 3 is 12. Numerator will be 3 3s are 9 minus 4 1s are 4. So it is 5/12. Since this fraction is a positive fraction, that means X is the sacrificing partner and he is sacrificing 5/12 of his share. Then let's come to Y. Y was sharing profit and losses in the ratio of 1/4. 1/4 is the old profit sharing ratio of Y and the new profit sharing ratio of Y is 1/3. Fine. So let us calculate the profit sharing ratio. The sacrificing share or the gain share. LCM is 12. 12, then 3 1s are 3 in the numerator. We have 3 1s are 3 minus 4 1s are 4, and the result is minus 1/4 is the fraction which we are going to get by subtracting the new share from the old share of Y. So if it's a negative fraction, that means Y is the gaining partner. Through this arrangement, जब Z एज अ न्यू पार्टनर एंट्री ले रहा है 1/3 शेयर के साथ आ रहा है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली शेयर करेंगे, इक्वली दे आर गोइंग टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस. तो इस अरेंजमेंट में Y भी गेनिंग पार्टनर बन जाता है. फाइन. तो Y अगर गेनिंग पार्टनर है तो Y will compensate the sacrificing partner X in a same manner as the new partner will. Z will compensate. That means बेटा ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल Z लेके आया है,
ये तो सारा का सारा 30,000 x के पास चला जाएगा, और y भी जो उसने शेयर 1/12 गेन किया है उसके लिए भी y कॉम्पनसेशन पे करेगा x को। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि y का कॉम्पनसेशन कितना होगा। उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, देखो z 1/3 शेयर के लिए अगर 30,000 गुडविल लेकर आ रहा है तो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी गुडविल गुडविल अगर मैं होल फर्म की निकालूं तो अगर 30,000 1/3 शेयर के लिए है तो गुडविल ऑफ द होल फर्म विल बी 30,000 into 3 which is equal to rupees 90,000. Fine, it is equal to rupees 90,000. तो 90,000 अगर फर्म की गुडविल है on the date of admission of a new partner, this is the value of self-generated goodwill of the firm. तो y कितना कितना पार्ट पे करेगा as a compensation for becoming the gaining partner to x, so he will pay 90,000 into 1/12. Fine, so y will pay, let us calculate it here, y will pay 1/12 of 90,000 as his share of goodwill. We'll get 7,500. Fine. So 7,500 is nothing but the amount of compensation which y is going to give to x. Fine. So this is y's share in goodwill of the firm which he has gained is rupees 7,500. So the next entry, which is the required entry to be passed in this question, इस question में हमें जो entry pass करनी होगी वो क्या होगी? Premium for goodwill account debited. Premium for goodwill account debited. ये goodwill कौन सी goodwill है? जो कि Z in the form of cash लेकर आ रहा है. Premium for goodwill account debited 30,000. Fine. Then y's capital account debited. Fine. Y is going to give compensation of rupees 7,500 for the share he has gained from the above arrangement. Fine. And the total amount which is received by the sacrificing partner, that is X, his account is credited. So to X capital account, total is 37,500. So being the required journal entry passed. So our entry is premium for goodwill account debited 30,000, Y's capital account debited 30,000, to X capital account 37,500. अब बेटा अगर आप इसके सॉल्यूशन में देखो जो बुक में दिया हुआ है वो सॉल्यूशन दिया है कैश अकाउंट डेबिटेड 30,000, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7,500, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 37,500. फाइन, वो इसलिए दिया है कि इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फॉर पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. एक सिंगल जर्नल एंट्री हमने पास करनी है, तो एक सिंगल जर्नल एंट्री के लिए हमने ये ट्रीटमेंट दिया क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ 30,000 से, यहाँ डेबिट हुआ 30,000 से, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. तो अगर एक सिंगल जर्नल एंट्री से मुझे इफेक्ट देना है तो आई विल पास द एंट्री एज कैश अकाउंट डेबिटेड 30,000, Y's capital account debited 7,500, to X capital account 37,500. I hope the solution of this problem is clear to everyone. The next question which we are going to take up from the same book, T.S. Garewal 2021 edition, it is question number 27. Question says that Anshul and Parul are two partners and they were sharing profit and losses in the ratio of 3:2. 3:2 उनकी old ratio है. नया पार्टनर पायल पार्टनरशिप में एडमिशन ले रही है. न्यू
पायल को जो एडमिशन दिया जा रहा है वो 1/4 शेयर इन द टोटल प्रॉफिट्स एडमिशन दिया जा रहा है, एंड फॉर 1/4 शेयर इन द टोटल प्रॉफिट्स पायल इज ब्रिंगिंग capital of rupees 5 lakh and the requisite amount of goodwill through check. जो अमाउंट जो आपके पास कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है वो थ्रू चेक आ रहा है. अब क्वेश्चन अराइज है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना पायल लेकर आ रही है. उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर at 3 years purchase of average profit of the last 4 years. यानी कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए. 4 इयर्स के प्रॉफिट, लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट मुझे दिए हुए हैं. 2018 में 4 लाख, 2019 में 5 लाख, 2020 में 6 लाख, 2021 में 7 लाख. और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो चीजें दी हुई हैं. एक चीज तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दी है वो ये दी है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. Fine. Closing stock for the year ended 31st March 2020 was overvalued. Fine. Closing stock overvalued था of this financial year ending on 31st March 2020 by rupees 50,000. फाइन. अगर बेटा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है बाय रुपीज 50,000 तो जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 50,000. अब आप देखो कैसे. ठीक है, कैसे. अगर आप रिकॉल करो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था क्लास 11th में. फाइन. ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते थे एज एन एडजस्टमेंट एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड, है ना. बाय क्लोजिंग स्टॉक हम शो करते थे ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. तो अब आप खुद देखो बेटा, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से ओवर वैल्यूड है यानी कि ज्यादा बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट योर ओपनिंग स्टॉक एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस एंड वी आर गोइंग टू गेट दी ग्रॉस प्रॉफिट. तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है एंड अल्टीमेटली see gross profit आपका 50,000 से increased आएगा which is to be taken to the profit and loss account और ultimately आपका जो net profit है वो भी आपका 50,000 से increase हो जाएगा. अब हमने तो normal profit calculate करने होते हैं, है ना. तो हम क्या करेंगे, normal average profit निकालने के लिए थर्ड ईयर के प्रॉफिट को 50,000 से डिक्रीज कर देंगे क्योंकि 50,000 से आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड था जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो गए 50,000 से. सो वील डिक्रीज 50,000 from the third year profit. And if see all of us know that closing stock becomes an opening stock in the next financial year. तो जो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 2020 का ओवर वैल्यूड था तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा बेटा वो नेक्स्ट ईयर का दैट इज 2021 का. फाइन. वो भी ओवर वैल्यूड होगा, है ना. वो भी हमारा ओवर वैल्यूड होगा बाय ओपनिंग स्टॉक इज आल्सो ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 50,000, है ना. अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा 50,000 से तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा बेटा वो 50,000 से रिड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 2021 का. राइट. तो अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 से रिड्यूस है मेरा नेट प्रॉफिट भी 50,000 से कम हो जाएगा. तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ऐड 50,000 इन दी प्रॉफिट फिगर ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021. तो मैं क्या करूंगी, लास्ट ईयर के प्रॉफिट में 50,000 ऐड कर दूंगी. क्यों? क्योंकि मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था. ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने के कारण जो मेरा प्रॉफिट आया वो 50,000 से लेस आ गया. तो मुझे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो मैं 50,000 लास्ट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर दूंगी. तो मेरे पास जो प्रॉफिट्स आए फर्स्ट ईयर का इट रिमेन्ड सेम 4 लाख, सेकेंड ईयर 5 लाख, थर्ड ईयर द प्रॉफिट विल बी 5,50,000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 7,50,000. फाइन. 7,50,000.
50,000. So if I'm going to take the sum total of 4 lakh, 5 lakh, 5 lakh 50,000, 7 lakh 50,000. So my total profit of the last 4 years will be 22 lakhs. Now let's calculate the average profit of your profits of last 4 years. So it is total profit divided by 4. So 22 lakh divided by 4, it is equal to rupees 5 lakh 50,000. Now beta, one more adjustment entry is given. It says that rupees 1 lakh should be charged annually to cover the management cost. Now management cost, हमारी जो ये expense है management cost, ये मेरा regular business expense है, fine. तो this is to be charged every year. So ये जो management cost है 1 lakh की, it is to be charged every year. This I am going to subtract from the average profit. Fine, this I am going to subtract from the average profit to get the figure of average future maintainable profit. Fine, क्योंकि management cost जो है that is going to be a revenue expenditure every year. तो मेरा जो average future maintainable profit होगा for the purpose of calculation of goodwill, it will be 4,50,000. फाइन. अब इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, इट इज 3. फाइन. सो द वैल्यू ऑफ गुडविल will be your average profit, average future maintainable profit, which is this one. Fine. Average future maintainable profit multiplied by number of years of purchase, which in our case is 3 years. Fine. So 4,50,000 multiplied by 3, it is, we are going to get rupees 13,50,000. Fine. So this is the value of self-generated goodwill of the firm on the date of admission of the self-generated goodwill of the firm on the date of admission of Payal. Fine. And Payal is bringing her share of goodwill through check. That means in cash. So we'll calculate Payal's share of goodwill. It is going to be, see, 13,50,000 is the total goodwill of the firm, self-generated goodwill of the firm on the date of admission of a partner. तो पायल का शेयर आ जाएगा 13,50,000 का 1/4. So we get 3,37,500 as Payal's share of goodwill, which she is bringing as your premium for goodwill. Fine. So my first journal entry to be recorded in the books of account will be, see, since the capital and the share of goodwill, premium for goodwill is brought in by the incoming partner in the form of check. So we are going to debit, first entry, we will debit bank account. Bank account debited to Payal's capital account, to Payal's capital account, to premium for goodwill account, to premium for goodwill account. फाइन. और अमाउंट क्या आएगी, देखिए पायल की जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, दैट इज 3,37,500. She is bringing 5 lakh as her share of capital. So total
amount to be brought in by Payal into the business is 8,37,500. Fine, 8,37,500. Now next entry will be for retaining the amount for the of this premium for goodwill into the business, and the next entry, second entry in the books of account will be premium for goodwill account, premium for goodwill account debited to Anshul's capital account, Anshul's capital account to Parul's capital account. Fine. And the amount of premium is to be retained in the business or to be distributed between the old partners in their sacrificing ratio. Now, in this question, except your old profit sharing ratio and incoming partner share, nothing is mentioned. So we know that the sacrificing ratio is going to be same as the old ratio. So we will divide this 3,37,500 in the old ratio, which is the sacrificing ratio between these two partners, that is 3:2. So Anshul will be getting 2,02,500. So see, if we calculate 3,37,500 into 3/5, fine. This is the share of Anshul, fine, which he is getting from this premium for goodwill, and Parul's share will be calculated as 3,37,500 into 2/5. So the amount will be 1,35,000. Right? If we calculate, the amount is 1,35,000. So the second entry to be passed in the books of account for retaining the premium for goodwill is premium for goodwill account debited 3,37,500 to Anshul's capital account 2,02,500 to Parul's capital account 1,35,000. I hope that the solution of this problem is also clear to everyone. That's all for today from my side. We'll take up more problems in the next class. Meanwhile, practice as many questions as you can from the same topic. Thank you very much.